supporting him when he files his nomination. The numbers actually don't matter in this election because it's a clear fight where Mohammad Hamid Ansari has an upper edge at the moment. The vice presidential elections would take place on August 7th. Hamid Ansari had filed his nomination just 3 days ago, and now you have the NDA candidate Jaswant Singh, who is just about to file his nomination. और न्यू नंबर गेम को लेकर जब एनडीए या फिर बीजेपी के कई नेताओं से पिछले कुछ दिनों सवाल पूछे गए पत्रकारों की, उनका साफ कहना था कि विपक्ष का काम है कि अगर आम सहमति बन रही तो ठीक है, वरना उनका जो दायित्व है कि एक मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतार कर जो विपक्ष की भूमिका है उसको निभाया जाए, और शायद उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इस चुनाव में। Absolutely, and this is a show of strength of which we were just talking a short while back. This show of strength. Remember, during the presidential nominations, when the presidential elections happened, you can see Jaswant Singh, senior BJP leader, Rajya Sabha just getting up, and these are the nomination papers on which Jaswant Singh will just sign his signature in just a short while from now. The other copies are also there? No fake currency. Not only to check. Nomination form has been given to the returning officer, that's the Secretary General Lok Sabha, T.K. Viswanathan. He would look at the papers, and then after that, Jaswant Singh would put his signatures. The process is still on. It's a show of strength. Remember, vice presidential poll has been an opportunity for the NDA to put up a united front, because during the presidential poll, there were fractured ties which came into picture. JDU had supported Pranab Mukherjee, but for this particular event, for the vice presidential poll, NDA has managed to put up a united front. Sushma Swaraj and Arun Jaitley talking to each other, but Jaswant Singh maintains his usual calm, his usual composure. Just a short while back, when he was starting from his residence, he said that he was a man who always saw challenges in life, and that's what he loved the most. The numbers don't favor him, but he still said that he has a lot of hopes from this poll. और नॉमिनेशन की बात करें तो 20 प्रस्ताव क्रॉस सेकेंडर्स 20 की जरूरत पड़ती है उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो नामांकन फाइल किए जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में इनकी संख्या 50 होती है। You can see all the senior BJP leaders over there. In the first rung, you can see senior BJP leader and leader of opposition in Rajya Sabha, Arun Jaitley. Next to him is Lalkrishna Advani. Jaswant Singh next to him. Then Sharad Yadav, Sushma Swaraj, Anand Geete. And you can be on behind chairs. You can see all the senior other leaders and also the NDA allies like Akali Dal. All the leaders you can see sitting behind him. The show of strength, another opportunity for NDA to put up a united front after fissures in NDA appeared from in the presidential poll. और अगर राजनीतिक हस्तियों के अलावा बात करें नीलू, तो यहाँ पर जसवंत सिंह की पत्नी और उनके बेटे भी इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनके साथ मौजूद हैं इस रूम में। मैं आज
जसवंत सिंह जो कि एनडीए सरकारों में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन उसके बाद कुछ विवादों के चलते कुछ दिनों के लिए शायद वो सक्रिय राजनीति से थोड़ा समय हटना पड़ा, लेकिन एक बार फिर इस अहम पोस्ट के लिए पार्टी ने उन्हें आगे किया। उनका नाम पार्टी ने उस पर मुहर लगाई और वो तैयार, उन्होंने कहा भी कि वो इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया और इस लिहाज से ये चुनौती उनके लिए भी अहम है। नेक्स्ट फॉर्म यशवंत जी के साथ अनंत जी, आप खुशान आप दोनों के साइन इस फॉर्म से यशवंत जी के इस फॉर्म के साथ। Sushma Swaraj, you can hear talking about the, the signatures of the proposers and the seconders who are needed during the nomination process. Remember, nomination process is the first step to the vice presidential poll, or for that matter even for the presidential polls, and after which it will be followed by the scrutiny and then the withdrawal. Vice presidential elections will take place on August 7th, and just a day after the monsoon session of Parliament begins. But for now, these pictures which you see right on the screen are of the nomination process. Jaswant Singh filing his nomination. He's already handed over his nomination form to the returning officer. The people behind him are taking a look at the 4 sets of nomination papers which have been submitted by him, along with the signatures of the proposers and the seconders. जो संविधान के जानकार हैं वो बताते हैं कि ये जो एक नियम इसमें है कि 20 प्रस्तावक और इसमें वोटर्स चाहिए होते हैं, उनकी संख्या बढ़ाने या फिर उनकी संख्या इतनी रखने के पीछे मकसद है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं वो इस चुनाव में शामिल ना हो सकें और जिससे इसकी जो गरिमा है वो बरकरार रहे। Candidate a receipt, and that receipt has been given to Jaswant Singh. और ये दूसरा सेट नॉमिनेशन का इस वक्त शहनवाज खान खड़े तो आप बोल Jaswant Singh started with a brief stint in army, and then he saw him heading the External Affairs Ministry, the Defence Ministry and Finance Ministry at different points in time. And he has also served as the Deputy Chairman of the Planning Commission. That's a very important post about which not much is being talked about. But yes, people do remember him for his tenure at the Defence Ministry, at the External Affairs Ministry. And just a short while back, Ambassador Kaju was discussing a few anecdotes which he had in the kind of desert connection he was talking about between Hamid Ansari and Jaswant Singh. Both being gentlemen in diplomacy and politics. One can't help but compare Hamid Ansari and Jaswant Singh, but yes, there is an equivalence also about which one talks, and that is the equivalence of stature, the equivalence of the kind of seriousness, the composure and the calm which both maintain, the kind of stoic silence which one is expected of a diplomat. You can see the second set of the nomination papers, the receipt being again handed back to Jaswant Singh.
These are live visuals for you from the room of the Secretary General of Lok Sabha. Remember, Rajya Sabha TV's camera is the only camera which is inside. So these are exclusive pictures for you. All the NDA leaders, along with senior BJP leaders, are flanking Jaswant Singh, who's come here for filing his nomination papers. Jaswant Singh was also a leader of opposition in Rajya Sabha in 2009, and after which he had accepted the offer from the local pro-Gorkha land parties of Darjeeling, and then he had contested the Lok Sabha polls from there, after which he had won from Darjeeling. He is an erudite personality who has worked on a number of books. A number of books which he wrote have been laudatory, some have come in for sharp criticism, but yes, one remembers him for the kind. One remembers him for being well-read. He's currently working on a book, on a biography rather, of C. Rajagopalachari, who was the first Indian to serve as the Governor General. चलिए एक और जो अहम बात देखनी होगी कि चुनाव में संख्या बल भले ही जो अब तक आंकड़े सामने आए हैं निकलकर उतने मजबूत दिखाई न देते हों जसवंत सिंह के पक्ष में, लेकिन जिस तरीके का उनका एक फैन फॉलोइंग कह सकते हैं, न सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि कहा जाता है कि दूसरी पार्टियों के अंदर भी उनके कई समर्थक हैं, उनके अपने लोग हैं, और विपक्ष में यानी कि जो कांग्रेस की बात करें, दूसरी पार्टियों की बात करें, कई ऐसे नेता हैं जिनके साथ गहरा लगाव रहा है। तो शायद ये बहुत अहम होता है कैंडिडेट के लिहाज से कि उसे चुनाव के दौरान वो जो संख्या बल उनका जो माना जाता है उससे कितना वो आगे बढ़ पाते हैं। One of the few BJP leaders who appeals because he doesn't have that ideological straitjacketing which others suffer. Ambassador Kaushik, could you just recount a few thoughts which are coming to your mind when you see him, these visuals, and then you go back to your memories when you worked with him? Well, I think Mr. Ansari has done great justice to the office they presently hold him. And if Mr. Jaswant Singh were to hold that office, both of them he would too do great justice to that office. So there are a lot of memories by working with both Mr. Jaswant Singh, but in many ways, as I said, they're both gentlemen, they're both erudite, both scholarly. But the paths they've taken have been very different. Mr. Ansari has been a career diplomat, after that an educationist. Mr. Jaswant Singh has been in public life for a very long time, and in public life he's been statesman-like. I think he's risen above party politics to have a vision of India, of where India's place should be in the world, and he's articulated that vision with great eloquence. And in private meetings too, whenever we briefed him, whenever I briefed him or officers briefed him, he was very quick to grasp the essentials of a situation. I recollect once when I was ambassador in Afghanistan, I came back to India and there was a very crucial strategic matter for us, and he was then holding the office. Election only on scrutiny you can you can't have a two-phase election. No, but just as therefore I asked these two requirements. Firstly, that there should be 20 MPs who propose, 20 MPs who second. Similarly, the requirement is that he should have a security deposit of 15,000. If he doesn't pay 15,000, it will not be accepted by the country. No, sir. No, sir. You have accepted. We have accepted. The only thing is, if he certifies copy,
of the electoral roll is not there, it can be rejected on the spot. We have actually rejected 2 who did not produce certified copy of the electoral roll. The law has to be amended, sir. The law has to be amended. इतना प्रोसेस करना पड़ता है पुलिस को आके इसी तरह से ये ज्यादा Lal Krishna Advani was talking about the security deposit of 15,000 which is expected of the candidate to give it along with the nomination papers. Right. प्रदीप जी, एक और चीज़ जो जसवंत सिंह जी को मैं देख रहा हूँ, और उससे पहले अगर हमने हमेद अंसारी साहब को नॉमिनेशन के वक्त देखा या फिर राष्ट्रपति चुनाव के जो कैंडिडेट थे, कई बार कुछ बदलाव, एक जोश, एक नया उत्साह नजर आता है। लेकिन जैसा कि हमने अभी तक देखा जसवंत सिंह जी को, कोई एक कुछ बड़ा बदलाव या जोश, एक जो खुशी एक होनी चाहिए चेहरे पे शायद नहीं। देखिए, दो चीजें, एक तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है जी, स्टेचर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वो यूफोरिया इस तरह का दिखाते हैं, बहुत खुशी भी जाहिर नहीं करते, बहुत दुख भी कम ही जाहिर करते हैं, वो सामान्य रहने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि रिजल्ट उनको भी पता है, तो एक जो वो उत्साह आता है ना जीतने की उम्मीद से या जीतने के विश्वास से, वो भी नहीं देखता है। वो पूरी पार्टी, जितने लोग बैठे हैं, सबको मालूम है कि एक रिचुअल है जिसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो माहौल में आपको फर्क दिखाई देगा जो हामिद अंसारी साहब के नॉमिनेशन के समय था और इस समय। लेकिन Mr. Jaswant Singh even accepted this nomination, perhaps because I think I see a lot of active political activity before him, in the next few years, and his mind is very, very sharp, and he has a role to play. So you mean to say that he shouldn't have accepted? I do feel perhaps, and if he had accepted, I mean it's my personal opinion, speculation only, perhaps he should have gone in for the presidential contest, from the BJP side, because they would have matched very beautifully, Pranab Mukherjee and Jaswant Singh, that they had gone through a similar political track of Deputy Chairman of Planning Commission, Finance, Defence, and... at least it could have been a rightful combination. Rightful combination. And BJP would have said, okay, we have got a strong... Even if you had lost, perhaps they would have found greater acceptability, and even Mr. Jaswant Singh, he set his eyes only on the vice presidency. That intrigued me. Okay. लेकिन क्या पता ये भी है कि बीजेपी ने शायद राष्ट्रपति के चुनाव में पहले वेट एंड वॉच की पॉलिसी अख्तियार की, और जब उसे लगा कि उस वहाँ पर असफलता मिली है, उसे सक्सेस नहीं मिला, तो यहाँ पर उसे लगा कि नहीं, एक अपना कैंडिडेट उतारना होगा, तब शायद जसवंत सिंह जी को आगे किया। मुझे लगता नहीं कि उनका दिल जसवंत सिंह जी के था या नहीं, वो भी एक कंपल्शन था कि उनके तरफ से किसी को खड़ा करना ही चाहिए। चलिए वर्षा, यहाँ पे हम लौटेंगे चर्चा में, लेकिन इस बीच जो एक अहम मूवमेंट कह सकते हैं यहाँ पर नॉमिनेशन के, और नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं जसवंत सिंह। So the process of nomination filing, that is over. Moments ago you saw Jaswant Singh thanking everybody, and the leaders are about to leave the room of the Secretary General. 4 sets of nomination papers were signed along with the signatures of the proposers and the seconders, along with the security deposit of 15,000. You can see all the leaders, Jaswant Singh, leaving the room of the Secretary General, and the process of nomination filing, that is over. Nomination filing is considered to be the first process. Sir, please. लेकिन सर ये तो एक ब्रीफ है, बाहर अरे यहाँ से तो लोग निकल भी नहीं पाएंगे, क्या निकलने दो ना, बहुत गलत जगह लगाया तुमने। This is a historic moment, Jaswant Singh. Of course it is. Every election to these 2 high officers of the Republic are historic moments. They come once in 5 years. And you are in August's company. Whatever has to be said today has to be said by our
जसवंत सिंह जी। All his life, he knows the nature of this fight, the arithmetic, not much in favor of him, but still having high hopes from this election. Nomination has been filed, leaders walking out of the room of Secretary General Lok Sabha. Remember, Rajya Sabha TV's camera was the only camera. Rajya Sabha TV's camera was the only camera inside. So we are getting you live pictures, exclusive pictures of the nomination process, which has just got over. और तारू जी, जैसे कि आप कह रहे थे कि बहुत ही गंभीरता के साथ कोई बात करते हैं, यहाँ पर भी जब अभी हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो बहुत ही सधे हुए शब्दों में, बहुत ही नपे तुले शब्दों में उन्होंने अपनी बात को रखा। हाँ, ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं इसे बता रहा था आपको कि मैं अफगानिस्तान में राजदूत था, दिल्ली आया, एक प्रोजेक्ट के बारे में था, बातचीत करनी थी और ये वित्त मंत्री थे जसवंत सिंह जी। तो मैं इनके पास गया, मैंने कहा साहब ये प्रोजेक्ट है, इसमें भारत के हित, इससे हमारे हितों को बेहतरी होगी। और उन्होंने कहा कि कितने पैसे लगेंगे, अब ये डिटेल्स में तो मैं नहीं जा सकता हूँ। मैं कहा साहब काफ़ी पैसे लगेंगे। तो उन्होंने एक ही शब्द पूछा इसमें, उन्होंने कहा, मुझसे अंग्रेजी में पूछा कि विवेक, इज दिस इन आवर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट? So I then told him, yes sir, it's in our strategic interest, we got to do this. So then he told me money will be available. Now, I thought that was the hallmark of a statesman. He didn't quibble, he didn't say that I'll have to, ask the officers, etc., budgets, etc. No technicalities. He said this is in our strategic interest, he understood it. He said money will be available. And it was truly a very, very significant project for India's strategy in the entire area. So that was a remarkable quality, is the remarkable quality. जी, पर सर, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव में अब दोनों नामांकन हो चुके हैं और जो एक चुनाव प्रचार की बात आती है, जिस तरीके के मुद्दों की बात होती है, राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके की हमने तस्वीर देखी और कुछ ऐसे मुद्दे भी शायद उठाने की कोशिश की गई जिनको लेकर आपत्तियां थी, यहाँ पर लगता है कि बहुत ही फेयर, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से और एक डिग्निटी के साथ इस कैंपेन को आगे बढ़ाया जा रहा है। I think basically because it's the nature of the office, I think. The Vice President's office is of a limited but very important issue. It doesn't have too much of a political resonance, and I think both sides have maintained that restraint, which was but natural. In the case of the President, I think it goes a little more than, though it's a constitutional office in itself, perhaps it impinges on the politics much more than that of the Vice President. Vice President is more or less. आपको लगता है कि शायद इस बार वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपोजिशन ने पॉलिटिकल रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो मेक बिलीव वर्ल्ड में थे, उनको उम्मीद थी कि कलाम लड़ने के लिए आ जाएंगे, मुलायम सिंह ममता समर्थन कर देंगी, हम समर्थन में आ जाएंगे तो इक्वेशन बदल सकती है। कोई प्लान बी था नहीं। जब वो जब गिर गया, कलाम सीन से हट गए, ममता और मुलायम अलग हो गए, तो उसके बाद क्या करें, उनके पास कुछ नहीं, यानी सब कुछ डिपेंड करते रहे कि और दूसरे लोग क्या करते हैं। ममता मुलायम के साथ पूरी पॉलिटिकल रियलिटी, उनको मालूम है कि हम चुनाव जीतेंगे नहीं, हमारे साथ कौन है, कितने वोट हैं, तो हम एक अच्छा कैंडिडेट दें जो लोगों को लगे कि हाँ भाई हमारे पास इस स्टेचर के लोग हैं जो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट हो सकते हैं। तो क्या ये कहा जाए प्रदीप कि कहीं ना कहीं जो रणनीतिकार थे बीजेपी एफ इंडिया की बात की, जैसे आपने कहा कि सिर्फ ममता और मुलायम के सहारे जिस तरह की सुगवाहट थी, उन्हीं के कंधों पर चलकर इस चुनाव में आगे वतनी पार करने की कोशिश। कोई रणनीति, आप युद्ध में जाते हैं तो दूसरी की ताकत के भरोसे नहीं जाते, अपनी ताकत के भरोसे जाते हैं। बीजेपी की अपनी कोई ताकत नहीं थी, उनको उम्मीद थी कि दूसरे उनको मदद करेंगे या दूसरे उनकी ताकत बनेंगे, वो हुआ नहीं। शायद सोच ये थी कि ममता और मुलायम चुनाव जल्दी चाहते। हाँ, ये भी था, और कलाम का कैंडिडेचर भी वो था। और जैसे मैंने अर्ज किया आपसे पहले, मुझे ये साफ जाहिर था कि अभी भी मुझे नहीं लगता है कि ममता और मुलायम जी चाहते हैं कि चुनाव फौरन हो जाए या जल्दी हो जाए। तो ये क्योंकि अगर वो चुनाव जल्दी नहीं चाहते हैं तो इस वक्त कोलिशंस का टूटना
पूरा डिस्टेबलाइज करने वाली बात है। But Parsa, as far as the political management which is being talked about, the way the strategy, it was strategized for the presidential and the vice presidential poll, do you somewhere feel that BJP or maybe NDA now needs to go back to the drawing board and maybe re-strategize themselves fully to make the next move now? Though we know that it's a fractured coalition, I mean both the UPA and the NDA, they don't look like a very stable alliance, but do you seriously feel that BJP needs to go back to the drawing board? They need to go back in to terms of drawing political management, because that's where UP yeah. has really succeeded. They need more than to go back to the drawing board. You know, they need to rethink about the issues. Right now, I do not think as a main opposition party they have a national agenda about the burning issues. What is their stance on the economy? What is their stance on foreign policy? They have stopped thinking. They are only thinking in terms of numbers, which is okay for immediate needs, you know, but you need a broader agenda. I think they need to forge an agenda before they can go into the election, and their agenda is not clear at the moment. बिल्कुल। और फिलहाल अब एक बार देख लेते हैं कि नामांकन से पहले जसवंत सिंह ने क्या कहा। अरे यहाँ से तो लोग निकल भी नहीं पाएंगे, भैया निकलने दो ना, बहुत गलत जगह लगाया तुमने। This is a historic moment, Of course it is. Every election to these two high officers of the Republic are historic moments. They come once in 5 years. And you are in August company. Whatever has to be said today has to be said by our जसवंत सिंह जी। तो जसवंत सिंह जो कि नामांकन फाइल करने के बाद बातचीत कर रहे थे राष्ट्रसभा टीवी से। अखिलेश तुमार इस वक्त हमारे साथ हैं संसद भवन कॉरिडोर से। जिस तरीके से अखिलेश, जो संख्या बल भले ही कुछ भी हो, लेकिन कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव जो है वो बेहद इसलिए भी अहम है कि एनडीए के लिए अपनी क्षमताओं को, ताकत को नापने का एक जरिया भी है और खुद के घर को मजबूती देने का एक पहलू भी, एक रास्ता भी। निश्चित तौर पे कविंद्र, एनडीए के लिए अहम घड़ी इसलिए है कि पिछले दिनों जब राष्ट्रपति चुनाव के समय देखे थे आपने कि एनडीए में थोड़ी सी कुलबुलाहट थी और शिवसेना और जेडीयू ने अलग जाकर, बीजेपी से अलग जाकर वोट देने का प्रयास किया, लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में उन लोगों ने एक साथ लौटने का फैसला किया है। लेकिन इसमें भी एक थोड़ी सी खास परेशानी है कि बीजेडी और जयललिता की पार्टी एआईडीएमके ने जिस तरह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के समय बीजेपी के साथ आगे आने का पूरा प्रयास किया और साथ में उन लोगों ने वोट दिया, इस बार वो स्थिति अभी तक नहीं बन पाई है। तो ये कहें कि यूपीए और एनडीए दोनों के लिए थोड़ा विन विन सिचुएशन है, तो दोनों के लिए थोड़ी परेशानियां हैं। यूपीए के लिए जरूर थोड़ी परेशानियां कम हुई है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी ने यूपीए के कैंडिडेट के पक्ष में मतदान करने का प्रयास किया, उसके अलावा नॉमिनेटेड चूंकि भरते हैं, नॉमिनेटेड भी वोट करते हैं इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में, इससे भी यूपीए को फायदा होने वाला है। तो अगर अंक गणित के हिसाब से देखें तो मामला दूसरा है, लेकिन अंक गणित से ऊपर उठकर अगर देखेंगे तो लोकतंत्र में जो सबसे खूबसूरती की बात होती है कि बिना चुनाव के कोई चीजें तय नहीं हो। सर्वसम्मति बहुत ही अच्छी व्यवस्था नहीं माना जाती है। सर्वसम्मति में कई बार प्रेशर, कई बार तानाशाही प्रवृत्ति आने का खतरा रहता है। तो यह जो ब्यूटी एनडीए ने दिखाई कि नहीं, इनके मुकाबले, हामिद अंसारी साहब के मुकाबले हम अपने सबसे जो महत्वपूर्ण, उन्हीं की तरह कद के, उन्हीं की तरह अनुभव के नेता जसवंत सिंह को खड़ा करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक बहुत अहम घड़ी है और यह हमारे लोकतंत्र की मजबूती और लोकतंत्र के अंदर की स्वस्थ परंपरा को दर्शाता है। कविंद्र, राइट, बट अखिलेश, देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स कमिंग इन दैट